serious, I'll be fine. मर्द को दर्द नहीं होता मैडम. I think the challenges that are normal in the making of any film, they were the same challenges. Getting Abhishek, getting Abhishek back in the saddle with me. There were, I mean, it was a pretty good journey, and it was challenging, of course, at most times. पर जब तक उसमें कुछ मेहनत ना हो और जब तक चैलेंज ना हो तो मुझे लगता नहीं कि कुछ काम करने में मजा आता है. स्क्रिप्ट के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा. जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी पहली दफा तो मैं आई वाज रियली एक्साइटेड. और मैंने धूम 2 नहीं देखी है, लेकिन मैंने धूम 1 देखी थी, मुझे बेहद पसंद आई थी. आई रियली एंजॉयड इट, आई रियली फेल्ट एंटरटेन्ड. समहाउ आई मिस्ड धूम 2. बट जब विक्टर ने मुझे कहानी सुनाई धूम 3 की, तो I was really amazed. Well, I hope I have creative differences in every film that I do, but nothing major. I think that Yashraj is a great production house. I'm really enjoying working with them, and they are very passionate about the films they do. They know the business really well. They know marketing really well. They know everything really well. So it's a great experience working with Adi and his entire team. Salman is a dear friend, and I think anything that he does will only be something which will help us. You know, I'm not looking at records really. I don't think any of us are looking at records. I think what is really important for us is कि जो फिल्म हमने बनाई है वो लोगों को पसंद आए और वो वाकई उनको एक बड़ी एंटरटेनमेंट फिल्म से वो एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा उनको मिले और उनको पूरा सेटिस्फैक्शन मिले. ये हम चाहते हैं. मैं आंकड़ों में नहीं जाता हूं. Well, I think like Amir said a while ago, this is the first time we've brought a certain edge to Dhoom, as you can probably see in the trailer. Dhoom 3 has got a bit more emotion than the Dhoom franchise is used to. It's a bit edgier. I've had fun catching all 3 actually, so it's been a challenge. I think we've achieved that. I can't say which one was more difficult to catch. I think they're all different circumstances, so they're all very different. The 3 villains have always been very different from each other. There's no similarity between them, and I really think Amir this time has pushed the envelope beyond what even we thought was possible. And full credit for him for doing that. I think he's done a brilliant job. I said it before we started shooting. I think he's done brilliant, memorable films. I think this will be his biggest and most memorable. Stunts, देखिए, I hope कि आप लोगों को अच्छे लगे और मुझे भी लगता है अच्छे आए हैं. और जो हमारे स्टंट कोऑर्डिनेटर थे, ज़्यादातर जो मेरे स्टंट्स हुए हैं, मेरे चेस सीक्वेंसेस, थ्रिल सीक्वेंसेस सारे शिकागो में हुए हैं. तो वी हैड a stunt person from LA who did a wonderful job. Conrad did a wonderful job, he and his entire team. But they were very safe in the way they were working. Actually, Katrina is a fantastic dancer. She's extremely flexible and supple. So I don't think she had a problem. She had absolutely no problem. आमिर, ये श्वेताब ABP न्यूज़ सर्विस में था एक्चुअली, उनको कुछ नहीं प्रॉब्लम थी. मुझे कोई आइडिया नहीं कितनी धूम मचेगी, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एक बहुत ही कमाल की एंटरटेनिंग फिल्म आप लोगों को दें. यही कोशिश रही है हमारी. धूम कितनी मचेगी तो वो तो पता लगेगा 20 दिसंबर को. जो आमतौर पे जो हिंदी फिल्मों के विलन होते हैं उस किस्म का विलन होता नहीं धूम में. सो आई डोंट वांट पीपल टू फील कि कुछ मैं विलन का रोल कर रहा हूं जो एकदम ब्लैक है या जो बहुत बुरे काम करता है. उस किस्म का विलन नहीं है. बट आई डिड द फिल्म बिकॉज आई रियली लव द रोल एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद अभिषेक एंड उदय, एंड आई मस्ट से इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. दोनों के साथ काम करके बेहद मजा आया. और दोनों के लिए मैंने एक नाम भी रखा है, याजूद माजूद. मेरी अम्मी मुझे बताती थी जब मैं छोटा था, जब भी आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो एक फरिश्ता बोलता है मत करो यार, ये गलत काम है, ठीक नहीं है, मत करो. दूसरा बोलता है कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है, एक ही जिंदगी, एक जो करना है कर लो. तो दोनों याजूद माजूद लगे मुझे, उदय और अभिषेक. उदय जो है वो सीधा है, फिल्म के अंदर टेढ़ा है वो फिल्म के अंदर टेढ़ा है, और जय दीक्षित सीधा है, लेकिन रियल लाइफ में एग्जैक्टली ऑपोजिट है. उदय सीधा है और ये टेढ़ा है. तो याजूद माजूद. जय दीक्षित एक पुलिस अफसर है एंड हिज जॉब इज टू कैच द थीफ. वो जज्बात में पड़ते नहीं है, बट हिज जॉब इज वेरी क्लियर. किसी ने कुछ बुरा किया है, मैंने उन्हें पकड़ना है, एंड दैट्स हिज ओनली फोकस. और वो ज्यादा उनको हिलाना बहुत मुश्किल है. ही इज अ वेरी डेडिकेटेड, strong and very persevering. Perseverance is one of his traits. और मैं तो ये नहीं कह पाऊंगा कि आमिर ने इस फिल्म में मुझे कुछ ज्यादा तंग किया in the film.
apart from that, working on the film, it was a dream. 24 सालों से सचिन जी धूम मचा रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर और उनके बगैर एक थोड़ा वीराना सा लगेगा, खाली खाली सा लगेगा उनके बगैर। लेकिन जो उन्होंने किया है वो हमारे दिलों में हमेशा के लिए समाया रहेगा। Every Indian feels responsible for Sachin's achievements. क्योंकि मुझे याद है कि जब वर्ल्ड कप मैं देख रहा था, I used to sit in the same place, wear the same clothes, not move. The entire country participates in Sachin's victories, and हम सबको लगता है कि ये हमारे वजह से हो रहा है। Dad was shooting for KBC, and the set of KBC is in your short studios. He has known Adi since Adi was, I think, brought to him in the hospital when he was born. So he has a bit of a connect with him, and Adi came to him and said, Amit uncle, I want to show you the trailer. I think the trailer. And he came home, and in his usual cool style, he said, saw the promo. Awesome. Oh, he spoke to me and he said he really loved it, and he was really happy. All right. So I was thrilled. Grandmaster Gogo. I think my favorite villain was Pran Saab, because when he used to come on screen, I used to get really frightened. हम लोग डर जाते थे. And he was one person who I think was, is the ultimate villain. And then there have been some amazing actors that India has seen as villains. Amrish ji, Prem Chopra ji, Manmohan, Madan Puri, Gabbar Singh. My father's very dear friend, Shri Amjad Khan was, I think they were shooting for Naseeb, and I went to the studio. They were shooting on the set, which was a revolving restaurant. And I saw him and I jumped on him and started beating him up. Because the night before I'd seen Barsat Ki Ek Raat, और एक सीन में उन्होंने डैड को खूब मारा था। मुझे बहुत बुरा लगा कि ये मेरे पिताजी को मार रहे हैं. So I started fighting with him and saying, आपने मेरे पिताजी को क्यों मारा? So for me, Amjad uncle has always been the quintessential villain. जी नहीं, क्योंकि इस शूटिंग के दौरान जब हम लोग शिकागो में थे, Aradhya had come with Aishwarya to Chicago, and Amir one evening came and spent an evening with her, and she was very pally with him. She liked him very much. Yaar, I just heard the script. It's superb. We'll have a great time. And I said, yeah, we will. He didn't know I had not heard the script. You have a very good role, huh? I said, thanks. अभी मैं उनको कैसे बताऊं कि I have not heard the script. मुझे पता भी नहीं मैं क्या कर रहा हूं पिक्चर में. I think I'll say that. You're absolutely right. I think this is probably the toughest character that I've played in my career so far. Yeah, that I can say that honestly.